And because when you come to Hanuman embodiment, and before the session, I was just lying down on the bed. I was thinking, ki, Amna, um, even the essence of, because Hanuman represents a lot of devotion, and when we talk about bhakti and devotion, it feels like it is something um, which kind of is very um, selfless, and just in a process, I abandon myself. I just think about the other person and make my life about them. The devotion feels like that. Um, but it, but when you truly experience it, and I think as coaches, we can experience it when it comes to work, and devotion to your client or devotion to a project that you are doing, you know. And when you see that and bring the essence of the devotion and, invite that devotion from Hanuman um, towards your work in a way that he fought and he realized his abilities beyond what he could comprehend. He forgotten about his ability to fly, forgotten about his ability of so much of strength that he possessed. But because he was so devoted to Lord Rama, he brought that devotion. The devotion brought him to realization because there is no other choice. And I have to remind myself of my strength and my capabilities beyond what this right now person, this small person, this inner child of me that can think of. It's like मेरे को तो नहीं आता, मैं तो नहीं उड़ सकता भाई. But because the devotion made me realize of the strength and the capacity and the potential that I have. Because I'm so devoted to my job, to my client, to my work, to what I'm building in the world. It also comes in that even before the session, I was feeling so exhausted after a conversation. And मैं नहीं उठ पा रही, मैं तो क्या बोलूं कि अभी नहीं, 15 मिनट और दे दो मुझे सोने को. बट दैट एग्जैक्टली लाइक 5 मिनट्स बिफोर मेरी आंख खुल गई. मैंने कहा नहीं यार बैठो, इट वुड नॉट बी गुड कि मैं 15 मिनट और मांगू. और like my energy has totally changed now because the devotion to this space has changed the belief that I had when I was lying on the bed, the energy that I had that when I was lying on the bed, the thought कि मैं इतना ही कर सकती हूँ, अभी नहीं कर सकती, ये है नहीं मुझ में, वो खत्म हो गया. क्योंकि क्योंकि नाम लाइक मेरे को यहाँ पे आना है, मेरे को सर्व करना ही करना है. It is not about me anymore. When we make it about ourselves in our work, then it becomes difficult because then it becomes about my story, my feelings, my emotions, my house, my things. But when you have something which is greater than you, now like there are 5 people that I would like to serve. This container is greater than, I see this container becoming larger and larger in the next 10 years. And I'm devoted to all those people who are going to come in future and in present. So my anything that seems very significant becomes very small. The devotion has a capacity to make it all very insignificant and really make you see your true potential beyond what you can think and imagine, because then only you like take those leaps and bounds to make it happen. So this is what I felt, how devotion and potential, like reminder of the potential, is something that I would like to learn when it comes to and embody when it comes to Hanuman.
The third thing is also strength, but वो potential में भी आ जाता है. But strength as a human being that we forget, but it appears in the worst of times. Like the strength that this day has taken you, maybe there must be some challenge in your life that you felt like, oh, ye to hoga hi nahi, but you went through it somehow. You did something to like just move out of it. Even if it was a toxic relationship, even if it was a job that you left once, if it was you just taking on this role as a coach, it was a huge strength. But धीरे धीरे करके हम भूल जाते हैं. तो what are my strengths and capabilities is also something that we have to look inward, write it down, and then remember it, because that will bring out the potential that we have. I'll give you prompts for these, and maybe we can write it down and we can also embody that in our next session, because मेरे पास अभी 4% ही बैटरी है. One more thing that I would like to bring in is the piece of communication. Is when can I, because Hanuman has also been somebody who could communicate and and was very witty in that, clear in that. And clarity in communication also comes from clarity within. And that also comes from practicing to access that clarity. ऐसा नहीं है वो clarity है नहीं, पर confusion का access बहुत easier है, क्योंकि attention बहुत सारा वहां पर है. तो जब मैं क्लैरिटी को भी एक्सेस करके कम्युनिकेट करना सीख जाती हूँ, I can get into that clarity and I can also bring that into my words. That's what we do when we write. That's what we do when you make a video, talk to somebody. How many times, you talk to somebody and you'll get more clearer on your thoughts. Like it happens to me always. When I talk to someone, oh yeah, no, but I can do that. Because when I'm talking to someone, am I able to access that clarity within? And I'm becoming more and more clear in my thought and in my words. So that what I'll do is maybe I'll put up some prompts for each of these for you to journal on it, for you to find it out for yourself. And when we meet next, we'll be doing more of embodiment practices on this. Another thing that I would wanted to do in the session, but what we can do is we can maybe recite Hanuman Chalisa throughout the week before you go for your journal writing or be in the morning, whenever you feel like. Before I go for these prompts or journaling anything, just to bring in that when you worship a deity, the traits come into you. And that's what we are here when we are here for it. So we're inviting those traits of communication, strength, potential, and one more I said. I'll write it down. We're inviting those traits within us. Huh? Devotion. Devotion, yeah. And I would invite you to also help me see that more clearly. तो मैं इसके कुछ prompts डालूंगी. Better can also sit with it, and I'll write it down today. So I'll have the week to work with it. Another thing to do is to recite Hanuman Chalisa as an invocation to that strength, potential, and devotion within you. And third is when we meet, we'll do the embodiment practices. I think it would be really cool. I don't know what we'll do, but
I think it will be figuring it out together. I have some idea. Yes. We have to do the journaling after reciting Hanuman Chalisa for a week, right? Every day you can recite and you can write down whatever prompt that you pick up with. Otherwise, also, there is no fixed format. You will recite today and you do the journaling, however you want to do it. But the recitation has to come with an intention of invocation of that, invoking the devotion, invoking the clarity, invoking the strength, invoking the potential that I've forgotten that I have. Yes, Sadhna. I was just, it came up, so I was like, we can do a small exercise of visualization where we expand ourselves and shrink also. That was one of the specialty of Hanuman. Like, whenever he wanted, he could expand himself. And when it is not required, for example, if something is going on in the family and you don't want to get involved in, then you can take a back seat, shrink yourself at that point, and then expand. That visualization we can do. Yeah, that would be so cool. Hmm. I think मेरे को ये आ ही रहा था 1-2 महीने से पहले. I think after retreat is the perfect time to get into the divine masculine now, because we have really heightened the feminine, and somebody who can hold that strength and potential within us has to be initiated now. That we'll be working on. Okay. How does it get better than that? What else is possible? Any other questions, sharing, reflections we have? I'll be sharing in the group like whatever I processed in the last whole week. Because hell lot of processing is going on. Like I know these are all repetitive patterns. My whole fears are coming up. Especially my biggest fear is fear of loss. Any place, even if I'm not making a forward movement in my business, that is because of my fear of loss. Like yesterday when I was journaling, I realized that I have this deep fear because my father used to stay away from us because of money. Just so I have this deep fear like if I earn a lot, I have to lose people. I have to be away from people. Earning money for the larger, something larger than this has Yeah, to. like if I have to work for my dreams, I have to space out from them. Whatever is that. And I realized that this phase, like the my father telling me all those things, I think the universe is making me process the loss actually. What I'm scared of losing, I'm already losing it. No, I might not lose it physically, but emotionally, internally, I'm losing it. Like, ठीक है, गंवा दिया मैंने, अब तो कुछ lose करने को भी नहीं बचा. So I that fear is that way. That actually, मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है पिछले 4-5 महीने से. आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग नाउ. आई एम लूजिंग एंड आई एम फेसिंग माय बिगेस्ट फियर्स एंड आई हैव नथिंग टू लूज नाउ. सो वही कि इसके बाद अब और ही क्या हो जाना है, हो गया सब कुछ हो ही जाए. लाइक माय बिगेस्ट फियर्स आर कमिंग ऑन माय लाइक मुंह पे आ रहे हैं बिल्कुल. ऑल शेम ऑल दोस थिंग्स, लाइक इससे जो जिन चीजों को सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं बड़ा बहुत बना के रखा था मैंने कि लाइक उसको तो मैं कभी ब्रेक नहीं कर सकती. लाइक दैट वाज माय वेरी हाईएस्ट वैल्यू. अब वो भी खत्म हो गई है. अब कुछ तो अब इससे ज्यादा क्या ही लूज करूंगी मैं. So and where various ways I have self sabotaged because of my fears. मैंने बहुत सारे ऐसे decisions like I wrote around 30 decisions which I have taken in my life जहाँ पे मैंने खुद ही जाके अपनी चीजें खराब की हैं. Just imagine a like where I don't wanted to shine myself. I was selected in IIT. मुझे shine नहीं करना था. I went over there like momentally decision लिया कि मुझे IIT में नहीं करना है, एक छोटे इंस्टीट्यूट में करना है. लाइक माय माइंड द वे ट्रैक्ड मी कि वहां पे बेटर फैसिलिटी है. तुम्हें मुझे आईआईटी की फैसिलिटीज नहीं दिखी. जस्ट इमेजिन आई वेंट ओवर देयर, मुझे उनकी लैब्स नहीं दिखी. एंड आई मेड अ मोमेंटरी डिसीजन कि दैट यू लाइक इंस्टीट्यूट इज बेटर. आई डोंट वांट आई when I was processing this, I realized these are all my mind's way of
making me not shine, because अगर shine करूंगी then I will lose my people. Because I had that experience कि 10th में मेरा board exam बहुत high हुआ था, and then whole of my relatives were there to almost kill me and my brother. Like there were things happening like that कि वो मुझे पूरा खत्म कर देंगे. I faced the biggest fear of losing my brother. And मुझे अब realize हुआ कि that's the reason I don't want to shine. That's why I'm trying to hide कि अगर मैं shine करूंगी then I will lose people, especially my closed ones. And So that was the big. yeah, I hear you. बेबी मेरा तो वाईफाई चला गया, तुम क्या कर रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो? And मैं उनको bluntly बोल रही हूँ कि मुझे तुम्हारा placement नहीं चाहिए because I want to pursue MSc. And they are looking at me like तो फिर तुम interview की बोलने की जरूरत नहीं. I could have processed it. बाद में अगर मैं नहीं pursue करना था, that is different thing. But उनके मुंह पे इस तरीके से बोल के आना, that was not right of. And then किसी और इंस्टीट्यूट में होती तो शायद मैं जॉब भी करती. आई रियलाइज कि मेरे पास वो आईआईटी का टैग लग रहा था ना मेरे ऊपर, वो शायद मुझे बहुत, that might be one of the reasons my mind was not ready to be in IIT. Yeah, but if you see it as a strength, Sorry? but if it was not wrong, then what would it be? It was my, like, I won't say it was wrong. It was just like, I would say this was my part to make me face my fears. That's what I realized कि बहुत जो चीजें मेरे को अंदर से निकालनी थी वो इन सब चीजों ने लाके मुझे अब they, all this was a I way to make me realize. want to see that you like exercising that power, that I want to feel it, but this is my decision, my life, my career, my college, my skill, and I'm exercising my power here. And maybe remembering that, oh, I had so much power to make such big decisions, and I did, even if that feel like कुछ workout किए कुछ नहीं किए, which is okay. सारे decisions workout नहीं I करते. can say I can that exercise, like I exercise my power to take risk in life and still And you're still alive. move on. Yeah, I'm still alive. I'm still moving. And when I hear you, and I'm saying something which feel like that I'm disregarding your experience. But I also want to see कि, and specifically for you, कि हम ना अपने आए और कहानियों में इतना फंस चुके हैं that हमें अब आए खत्म करना पड़ेगा. When it comes to devotion, if it is not about you, not your father, not your mother, not your brother, not your sister, not your story that you have been built, then what would it be for? So that when that becomes the focus of your creation, that would propel you to move in that direction. Otherwise, until it is attached to I, you would always find something to cry about. And after I was feeling so like मुझे सडनली से ऐसा आया कि मैं साधना को बोलूं कि मैं तेरे को कोई एक स्टोरी देखा इमोशनल रोलर कोस्टर का ना, और मैंने एक उस पे आइडिया पे बात किया था एंड यू डिडंट पुट अप एनीथिंग ऑन इट. अब मेरे को वो स्टोरी दिखा, मैंने कहा अच्छा शी इज अगेन अवॉइडिंग टू डू दैट, लाइक इट्स माय पॉइंट ऑफ इट माइट नॉट बी ट्रू. एंड मेरे को लगा कि ये जो एक फोर्स चाहिए ना फ्रॉम दैट वेरी सेंटर्ड स्पेस, नॉट सेंटर्ड स्पेस ऑल्सो, ये जो फोर्स चाहिए फॉर समथिंग विच इज ग्रेटर देन मी, विच इज ऑल्सो द सोल्यूशन फॉर माई प्रॉब्लम्स, but also like it is greater than me that I'm building. But हम वो एक्सपेंशन और श्रिंक वाली बात कर रहे हो ना, तुम बार बार श्रिंक कर जा रहे हो अपनी कहानी में, और मैं कह रही हूँ कि यार वो श्रिंकिंग is not you, like you're also this expansive being.
और तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि मैं एक्सपेंसिव बीइंग हूं और यहां से मुझे बिल्ड करना है, क्रिएट करना है. So anytime I shrink, I have to have a conscious choice to expand. Knowing एक्चुअली वो दैट स्टोरी वाज माय पुश टू एक बार मैं उसको वापस लेकर आऊं. एक्चुअली मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था. आई गॉट दैट पोस्ट एंड आई वाज लाइक कैन आई यूज इट फॉर माय लाइक तुम्हारा कनेक्टेड. पॉइंट ऑफ व्यू था, वो मेरी एनर्जी आई थी. नहीं, आई एक्सेप्ट दैट. बट उस टाइम पे था कि मैं इसको कैसे लाइक मेरे दिमाग में चल रहा था कि हाउ शुड आई ब्रिंग इट बैक. वो वापस से उसको मैं लेकर कैसे आऊं. लाइक ठीक है, इससे रिलेट करके डाल दे. सो गुड. तो वो श्रिंकिंग से आइडेंटिफाई कर लिया है. एक्सपेंशन याद नहीं है. एक्सपेंशन इज योर ट्रू आइडेंटिटी दैट यू हैव फॉरगॉटन. एंड यू, आई गॉट मेरी वो टेंडेंसी है खुद को स्मॉल बनाने की एक्चुअली. मेरा गम, मेरा रोना, ये है वो है, ऐसा हो गया वैसा हो गया. भाई मेरे तो माँ बाप सबसे बुरे दुनिया में. अरे मेरे माँ बाप है, मेरे साथ ही ऐसा हो गया. ठीक है, ऑल ऑफ दैट गोज ऑन. बट देन हु आर यू beyond these stories? Who are you? Where are you? Who will you be? Where will you be beyond these thoughts, feelings, and emotions, stories that you have built for yourself? And it's okay if you cannot be there for the entire day, but just those 2 hours every day, you have to be that. Expand. That could also be before these 2 hours, you do the chalice or whatever, maybe a simple mantra and say, okay, I'm expanding to my higher, like, this bigger version, which is beyond this conscious version of me, which is not at all concerned with these stories, illusions. क्योंकि कोई भी नहीं है दुनिया में, इस पूरे 5-6 लोगों में, जिसके पास कहानियां नहीं है. कुछ लोग ही कहानियां अभी नहीं दिख रही होंगे, मे बी आगे दिखेंगे. हाँ, क्या है, कहाँ पड़ गया ये एक आदमी, पता नहीं कहाँ कैसे पड़ जाता है. Any other questions, sharing we have? I have a question. Uh, Um, like you guys were speaking, I don't know why this thing came in my mind. So when I started my inner work, it was almost 3, 4 years back. And before that, I was a very, very driven person. I had a vision, I had a plan, I had execution, I had everything. But ever since I started getting coached and I went under that graphotherapy and then now I'm doing this work, I don't have that feeling of the drive anymore. That kind of where I've I decided something and I I've gone and resonate. I've done it. And recently one of my dear school friends, he got into Columbia Business School. And I was like, fuck, this was my dream. This is what I wanted to do. And now I look at all my friends, they are doing so well and they haven't taken therapy or coaching or healing. And sometimes I get in like this question comes up for me that what am I doing this for? Hence वो तुम्हारे पास लार्जर पर्पस है ही नहीं, क्योंकि Very well. तुम व्हाट एम आई डूइंग दिस फॉर. तो तुम दूसरों को कैसे बुलाओगे, कहोगे यार तुम अपना काम कर लो, क्यों पैसे. सेम आई हैव फॉर मनी. लाइक जब मैं हीलिंग में नहीं थी, लाइक आई वाज नॉट एट ऑल इन हीलिंग, मेरे पास पैसों की बरसात रहती थी. और हीलिंग में आने के बाद व्हेन आई स्टार्टेड इट्स समहाउ लाइक वो डिप हो गया. इट्स तुम्हारे पास पैसों की बरसात थी, तुम्हारे पास पैसे थे, बट इट डज नॉट इक्वेट टू हाउ ऑथेंटिक, हाउ connected to the self you felt. Maybe there was regular income also coming, but there was something, it could be a spiritual awakening also, where you realize, oh, there is more. And that more, that something that I would like to access, and it feels more kind of more valuable. भले ही वो amount में भी कम लग रहा है, than what I have right now. कि अभी मेरे पास पैसा आ रहा है, दोस्त हैं, फैमिली का सपोर्ट है, पर मुझे
वो सेटिस्फैक्शन और वो कनेक्शन विद इन फील नहीं हो रहा जो मुझे। लाइक मेरे इतने मतलब व्हाट आई वांट से लाइक उस टाइम पे इतना स्ट्रांग बिलीव था कि लाइक मुझे चाहिए तो मुझे मिलेंगे, और उस जितने चाहिए उसके हमेशा डबल मिलते थे। या दैट वाज हाँ, उसके बाद देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट मनी। देन आई रियलाइज कि मेरी दे आई हैड नेगेटिव बिलीव्स, लाइक मेरे पास एक बहुत स्ट्रांग बिलीव थी कि मुझे बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। एंड देन सडनली इट वाज लाइक क्यों मुझे इतना ही क्यों चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। बाबू, सो ये में दिक्कत नहीं थी, लेकिन अम, हमने डेफिनेटली व्हेन वी कम इनटू कोचिंग और थेरेपी, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ लेते हैं और अपनी कहानियां समझने लगते हैं, और उनको रिजॉल्व करके हमें एक सेंस ऑफ एक्सपेंशन भी फील होता है। पर it also can become that you are not really uh, operating from that expanded space, because you are again coming back to the story and plot, and you're staying पहले। मतलब मेंटली तो हम इवॉल्व हुए, बट इंटरनली हम अभी भी वहीं पर हैं, दैट काइंड। ये इंटरनली भी तुम शिफ्ट हुए, लेकिन उसको रियलिटी में ऑपरेट नहीं किया उससे। तुम्हारा थॉट तो चेंज हो गया कि मनी इज एनर्जी, यू नो, बट जब रियलिटी में ऑपरेट करने की बात आई तो वो अलाइनमेंट अभी बना रहे हो तुम, कि अच्छा मनी इज एनर्जी, अगर मनी मैं जितना मांगूंगी मिल जाएगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं पूरे दिन बैठी रहूं मांगती रहूं? नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं, अगर it's clear that I will not fail because I've asked for it and money has to come, then in thousand different ways I can ask for it, by my client, by my post, by my content, by people I'm talking to. I've become the walking, talking money energy on the planet. So वो internally हमने, mentally हमने shift कर लिया, मे बी इंटरनली भी थोड़ा शिफ्ट कर लिया, बट उसको ऑपरेट करके एम्बॉडी नहीं किया। हम अभी एम्बॉडीमेंट सीख रहे हैं, एंड इट इज एक्चुअली अबाउट, एंड हेंस आई थिंक specifically in the masculine embodiment we have to become more accountable also to each other, to the space, कि यार हम इसको एम्बॉडी करके वॉक, टॉक एंड वॉक कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, रिजॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कचरा हमेशा रहेगा। देर विल नॉट बी अ टाइम व्हेन यू विल बी फुली इवॉल्व्ड। सो इस इवॉल्विंग में ही तुम्हें अपने एक्सपेंशन को एक्सेस करना और क्रिएट करना है। बाकी वन आई एम श्योर जो कोलंबिया में चले गए हैं और जो कर पा रहे हैं, बट अगेन it does not equate, like going to Colombia, making money is not equal to um, satisfaction, joy, happiness. And not going also doesn't equate to that. क्या क्या बोल रहे थे सर? I have one question. Like when you say that we get entangled in the stories, but like मेरे दिमाग में उन चीजों पे जाने का रीजन ये होता है कि आई वांट टू नो, लाइक दैट इज व्हाट आई डू विद द पार्ट ऑफ आईसीएच, कि लाइक उस इनर चाइल्ड के साथ जाके उसे सेफ फील करा के यहाँ लेकर आने। बट उस प्रोसेस में दिमाग में चीजें चलती रहती है कि लाइक अच्छा ये भी था, यहाँ भी था, यहाँ पे भी था। तो इसीलिए ना सो सेल्फ वो हो जाते हैं, हार्मिंग भी हो जाते हैं, क्योंकि तुम में ना उलझते चले जाते हो। लाइक हाउ डू आई सेपरेट कि लाइक मैं उन चीजों पे जाऊं बट आई डोंट गेट एंटेंगल्ड ओवर देयर। तो यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से allocate a time for it, do it। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी बातें सुन के तुम पूरे दिन कर रहे हो ये काम, तो नहीं, डू। बट होता क्या है कि मैं करती हूँ तो आई फील वेरी ड्राउजी आफ्टर दैट। वो करने के बाद ना मेरा पूरा दिन सोने में ही निकल जा रहा है। हाँ, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसिंग चल रही है, एंड वो टाइम दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे लिए जरूरी है अभी पैसे बनाना और काम करना और एनर्जी लेवल्स मेंटेन करना भी,
तो फिर उसको फिलहाल के लिए, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल यू माइट ऑल्सो से कि यार आराम कर रहे हैं, आराम कर लो, and that's what your body needs. But if it is not something that you want to right now in the scenario of yours, then maybe do the work which is more nourishing, nurturing, which elevates your energy level. So there are two ways. या तो तुम जा जा के पूरे घर में देखो कि कहाँ गंदा है, कहाँ गंदा है, कहाँ गंदा है, ठीक है, और वहीं बैठे रहो और कोई देखते रहो क्या क्या यहाँ पे कूड़ा पड़ा था ये वो। या फिर तुमने सिंपल एक झाड़ू लिया और धीरे 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 साफ किया, और जो गंदा था वो अपने आप हटता चला जा रहा है ना। तुम्हारा फोकस है कि वो हाउ क्लीन दिस इज बिकमिंग, maybe you're decoring the house and you're like, today I'm like really just decoring, putting nice pieces over there, putting a flower over there. So you're doing the work which elevate your energy level. And there will be times when you feel like, okay, no, this point of view is really huge and intense. Then maybe write that down. But if today you don't have the bandwidth for it, don't go over there. Write it down and go over there. Maybe एक डे डिसाइड कर लो कि अच्छा सैटरडेज एंड संडेज आई टेक रेस्ट एंड सैटरडेज विल गेट इनटू इट। सो हैव दैट जर्नल जिसमें लिख के तुम कबर्ड में रख दो and you'll come back to it. So that's also promise that with your inner child that, oh, now I'm not ignoring it. I've written it down and I'll come back to it. So this is how you'll also be able to maintain those energy levels. We have to become kinder to ourselves in this process. हम सब अभी सॉल्व कर लेना चाहते हैं, पर मैं बता रही हूँ वो दरिया है, एंड हेंस इवोल्यूशन भी बहुत इन्फिनाइट है, तुम कहीं तक जा सकते हो, विच इज द लाइट ऑफ इट। Like what I was doing was like मैं कुछ hours allocate कर रही थी कि मैं उस like to do the self work, उसमें like I do वो और sorry सेल्फ लव वर्क करो तुम, okay learn how to do the self love work, and specifically when you do this inner child work and ये सारे work internally with yourself, no, I would say best is to do it with somebody else only. Doing it with ourselves can really make stories very complex. अगर तुम्हें अपने साथ ही करना है, then do it like in a week once. That's what you can afford right now. Yes, Manvi. Sonali, do you think there are any disadvantages of doing the inner work? Disadvantages of doing the inner work. Yeah, disadvantages are that a lot of things that you could ignore before are becoming more evident and clear to you, and you cannot ignore it, and you need to work on it. So sometimes ignorance becomes bliss for a lot of people, but it is not for you right now. Yeah. And hence inner work भी shadow work भी होता है और light work भी होता है, और hence मुझे ऐसा लगता है कि हमें दोनों ही जरूरी है। तुमने भी देखा होगा डिवाइन फेमिनिन एम्बॉडीमेंट में आई ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग इन द काली एंड देन गो टू द सेंसुअलिटी, so that there is always that balance coming, so that you don't think that inner work is all about pain and sorrow. No. Inner work का पर्पस क्या था? To make my life more like delicious. And when life doesn't feel more delicious, then we are वो हो सकता है हमेशा ना लगे कि अगर तुम बहुत शैडो में चले गए हो तो देर विल बी अ टाइम फ्रेम जब लगेगा अरे यार रोना गाना सोना भी हो रहा है, बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कम आउट ऑफ इट एंड नॉट गेट स्टक ओवर देयर। सो द प्लेजर बेस्ड जो पाथ है ना, इवन मैं यूनी विस्परिंग डिजाइन करी थी एंड मैंने उसमें 2-3 चीजें बनाई और मुझे लगा ओ लाइक ये तो मतलब इतना ज्यादा मतलब डीपली हीलिंग है, ट्रांसफॉर्मेशनल है, इंटेंस है। मुझे लगा यार ये तो कभी किया नहीं किसी, मतलब मुझे लगता है नहीं है कि ज्यादा लोगों ने किया होगा, बट वो सिर्फ जैसे मैंने अभी 3 days
मेरे दिमाग में 3 days चल रहा है, वो 3 में ही 6 modules बन जाएंगे आई बिलीव। पर मेरे को अभी दिमाग में 3 full days चल रहे हैं somehow। फिर मुझे लेकिन अब समझ में आ गया कि द सेकेंड डे थर्ड डे हैज टू बी वेरी लाइट, you know, the space that you created by letting go of the stories and pain and blah 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 has to now filled up। घर तो खाली कर दिया, लेकिन अब खाली घर में थोड़ी ना भूतों की तरह घूमोगे। तो नाउ द डेकोरेशन ऑफ इट, द लविंग ऑफ इट, कहाँ फूल रखने हैं, कहाँ पेंटिंग रखनी है, कहाँ पे यू नो लाइक लिविंग इन दिस हाउस फील्स नाइस। तो योर इनर रियलिटी मस्ट फील नाइस लाइक दैट। So close our sessions, even with your clients, close your sessions with lightness. Because most of the people are not in a space जहाँ पे तुम उनको खुला छोड़ दो कि हाँ अब हम डार्क में चले गए, अब थोड़े दिन यहाँ रह के रखो, नहीं। They must be able to access the light and have some lightness in the house. Maybe your one room right now where I feel, great, nice. There are flowers, there's a vase, there is beautiful things around, and I want to live here. We have to also design our inner reality like that. So, um, Are you here? I'm back. She's out. I'm Okay. back. ये जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे। तो yeah, hence like even the Whispering program, I realized, oh, this has to become a very You're on mute. am I here? It's actually power, I think, not the bandwidth. Yeah, it's power. It's power, it's power, it's power. Can you guys hear me? Yes. Yeah. Okay. So when I was making Whispering, I knew that अगर हम ट्रॉमा और पेन में जाएंगे ना तो ये एंडलेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर केवल खट 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 उसको एक्सेस करना है एंड देन लाइक रिलीज करना है, एंड देन वी हैव टू रियली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन accessing the pleasure, accessing the the power of it, the fun of it, the lightness of it, because yoni is also attached with, associated with pain for most of the women. Life is also associated with pain for most of the people. Relationships are also associated with pain. So now Yeah. side of it is something where, oh, if life could be about pleasure, love, connection, um, when there will be grief, when there will be loss, when there will be fear. If yoni could be about expansion and power and pleasure, then how are you guys here? Then how would it look like? I think wo bhi, that's really important because we have forgotten about it. So the inner work that you are doing is to make your life more pleasurable, more delicious. And when you feel like, oh, I've gone too much in the dark, come back to the light. Yeah? Yeah. Resource is important. Yeah. I do have another question. While my life has become more pleasurable after DFE especially, but recently my mom told me that तूने तो थेरेपी में इतना पैसा वेस्ट किया है, क्या हुआ? Look at you, you still have anger issues. What is the point? And that did make me question, because the achievements that I have, the things that I'm proud of, they don't meet the standards set by people. So I cannot, so no matter how many spaces I create for myself, like there's DFE and we met in the retreat, I also live with people who don't understand this work, who have never experienced what I've experienced. And for them, standards are how good you look, how much money you've made, घर खरीदा, कब खरीदा, all of that. Time पे शादी कर लो, time पे बच्चे कर लो. Sometimes it's hard to fight it, Sonali. It's Yeah, hard to drop the fight. not question yourself that what am I doing? Drop the fight.
अगेन इट इज नॉट इधर और, जो तुम कर रहे हो वो सही है, तो वो जो मांग रहे हैं वो गलत नहीं है. This is their belief system where they think this all makes you worthy. Yes. Mhm. Because they think this all makes them worthy. Again तुमने कंफ्लिक्ट में फंसे हुए हो, जिसमें या तो मैं वर्दी हो सकती हूँ या वो वर्दी हो सकते हैं. क्योंकि या तो वो इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए स्पेसेस भी नहीं बना रहे हैं, वो जो कर रहे हैं उसमें वो खुश भी नहीं है. Hmm. ऐसा ये फाइट ऑफ हैप्पीनेस तो है ही नहीं. मे बी यू हैव मोर हैप्पीनेस एंड जॉय देन देम, बिकॉज देयर इज मोर emotion, there is more access to that. बट अगर ये वर्दीनेस की फाइट है, तो फिर वन ऑफ यू इज नॉट वर्दी वाला सिनेरियो है नहीं. वो भी अपनी वर्दीनेस की फाइट कर रहे हैं. वो ये सब कुछ करने के बावजूद उन्हें लगता है वो वर्दी नहीं है. क्यों? क्योंकि उनके बच्चे बर्बाद हैं. तो कहीं ना कहीं वो अभी भी वर्दी है नहीं. और तुम्हारे सही होने से, उनके हिसाब से तुम्हारे सही होने से भी उनकी वर्दीनेस नहीं आएगी. When I say drop the fight, you have to drop the fight to make them wrong. You have to tell them that they are right. They're Hmm. continuously fighting to be right. You have to tell them, oh no, you are right. You are much older than me, knows better than me. Maybe I'm the wrong person here and I hear you. You don't have to follow that. You have to drop that fight outside and within. They're right in their stories and their thoughts. They're not saying anything wrong to you. It's true. We have to start seeing people opposite of us in their rightness also. क्योंकि हम जब ज्यादा इनर वर्क कर लेते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम सही की तरफ जा रहे हैं, वो सब गलत. Yes. बट द इनर वर्क इज नॉट अबाउट सेपरेशन, इट इज अबाउट इंक्लूजन. कि Hmm. क्या तुम्हें भी वैसे ही देख सकती हूँ कि मैंने डीएफई बनाया, तो आई डिड नॉट बिकम ग्रेटर देन यू बिकॉज यू आर गेटिंग कोच्ड एंड मी. आई एम नॉट मोर स्मार्टर देन यू. आई एम ऑल्सो एज हु यू आर. There's nothing that can make me righter than you because I have said certain things or not. Because these things are also very temporary, Mandy. And how much do you know me? And how much do I know you anyways? The Yeah. we're fighting right now, मुझे वहां रख दो तो शायद मैं उससे बुरा लड़ूं. तो हम बहुत बार कंपेयर कर रहे होते हैं जर्नीज को. मैं शायद पिछले 6 महीने में यही समझ में आया कि यार जर्नीज कंपेयर कर ही नहीं सकते. हर इंसान कितना सुंदर है और कितनी प्यारी जर्नी कर रहा है, वो सिर्फ उसको पता है. For a lot of women, like, hmm, I'm back. Yeah. Hmm. For a lot of, हम For a lot of women. जब भी किसी को बड़ा बना देते हैं ना, हम अपने आप को छोटा बना देते हैं. और हम छोटा बड़ा की सही गलत की आदत हो गई है. मैं भी गौरव की क्लास में थी, मोमेंटम मास्टरी. तो ही गिफ्टेड टू अस इन, आई विल से. तो मैं तो सारी क्लासेस बंद कर दिया गौरव की. फिर मैंने कहा चलो ये कर लेते, बिकॉज फेल्ट लाइक प्रिपरेशन टू आर विल से ऑल्सो. तो मैं देख रही हूँ वहां पे, ओ गौरव यू आर लाइक समथिंग, यू आर यू, बिकॉज ऑफ यू आई हैव डन दिस. एवरीबडी सेइंग दैट. एंड आई रोट डाउन द कमेंट, this no, look, like, we must not forget this, that nobody else is source, nobody else is greater. He's only showing you the mirror. ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारी जगह आगे काम कर रहे हैं. Hmm. नहीं है कि उसने तुम्हारी जगह कंसल्टेशन ले लिया, फिर तुम्हारी बदल दी आगे. नहीं. ही जस्ट शोड यू अ पॉसिबिलिटी कि अच्छा ये है तो तुम ये कर सकते हो. और फिर तुमने ही किया सब कुछ. Hmm. और जब तुम कहीं ना कहीं किसी और को बड़ा बना देते हो कि भगवान ही करेगा, यूनिवर्स ही करेगा, मैंने मांग लिया है, तो
फिर तुम भूल जाते हो कि सोर्स तो तुम ही हो. यूनिवर्स इज ऑल्सो एक्टिंग थ्रू यू ओनली. So to remember that you are also employing me, employing other people to show you your abilities, to show you your potential, to show you a possibility that only you will be able to really embody and take it. Yeah. Also showing you a possibility that you want to take it or not. That's okay. That doesn't make them wrong either, or small either, or better either. It's just a different possibility than the one that I am showing to you or somebody else is showing to you. Mm. There is another question that, like takes a lot of space in my mind is sometimes I question why am I like this? Because there are people who don't do inner work and they do absolutely fine in life. And then they pass away. And so many generations have come and gone and haven't felt or done what we have done. And sometimes I wonder कि मेरे में ऐसी awareness क्यों थी? Like why did I come into this path? What if I was like other normal people, just, did XYZ things, degree, and then another degree, and then job. So this question is also, I think it's all coming from a space because of the fight I had with my mom and like how she's told me that every decision that you've taken after college has been wrong. Look at your health, look at your bank balance, look at the way you're leading your life. You are an absolute disappointment and disaster. A lot of my questions today are coming from that space. I think the biggest one is the financial. अगर financial stability होती तो कोई कुछ नहीं बोलता, looks नहीं बोलता, like the other Exactly. thing settlement नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, बाकी चीजें कोई question नहीं करता अगर financial stability होती तो. No one Exactly. will question. And like suddenly they think they have the right to take decisions for me, which they haven't done all my life. And suddenly my life feels like, they are governing what kind of, where should I go, where should I live, what should I eat, who should I marry. I'm feeling suffocated. I'm feeling powerless. Yeah, because money is power, no? If Yeah. we feel like that, let's not deny it. Yeah, financial stability is important for me to have more choices. Okay? And even if that is something that, you know, becomes the focus for me, and I really make it happen, I will make it happen. It's like if I put a gun on your head and I ask Yes. you, please 3 lakh rupees. Yeah. You make it. You will make Yeah. it somehow. You will do anything and everything to make it. Yeah. The devotion to your financial stability, like give it a different twist to your perspective. Then the force and the pressure that they put on you, give a different twist that works for you. कि अगर मैं अपनी ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए डिवोटेड हो जाऊं तो पहली बात तो कितने लोग की जिंदगी बदल जाएगी. Those who are tied with you to do their inner work, because now they are able to have better self-esteem, more self-worth, more control of their choices in life. And when you will get that financial stability, you will also be able to help them find that stability. क्योंकि यार मैं कर सकती हूँ, मैंने बनाया गन पॉइंट पे, तो तुम भी बना सकते हो. जब तक मैंने नहीं बनाया मैं तुम्हें क्या गाइड करूंगी. मुझे ही डाउट रहता रहेगा. So your financial stability will change the life of your future clients, your present clients, will change everybody's life. So it is something which is important, and money is an exchange जो हमारे लिए हमारी कंडीशनिंग ऐसे बना दे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सचेंज हो जाता है. तो हम उसके लिए फिर कुछ भी करते हैं. ऐसा नहीं है कि मतलब एक ड्रेस नहीं है तुमने मुझे दे दिया भूल गए. तुमने मुझे पैसे दिए तो तुम्हें याद रहेगा कि ये पैसे मुझे इसको देने हैं या लिए हैं या दिए हैं. तो जब वो it becomes about money and it becomes about your financial stability, then bring all your energy, bring everything that you have, remind yourself of your power to make that money 3 lakh rupees at gunpoint.
And not for your mother, not for your father, because that's not what you will do for, but for yourself, for your clients, for your vision that you have about your life. उसमें इतने डिस्ट्रैक्शंस है भाई तो हो नहीं पा रहा है। हाँ, तो वही डिस्ट्रैक्शंस मैनेज करने के लिए हमने सबसे पहले बात की थी, हाँ है ना। और वो जब इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना मनवीज, वही है, इधर कोई बंदूक रख देगा ना, डिस्ट्रैक्शंस नहीं दिखेंगे। या दैट्स ट्रू। बस अब सोचो कि बंदूक रख दी है तुम्हारे, अभी क्या चाहते हो? जब वो लड़का सामने आ जाए, शादी कराए जबरदस्ती, ऐसे फेरे लगवाए, तब तुम्हें लगेगा बंदूक रख दिया। हाउ वुड यू फील कि बंदूक रख दिया? अब बेचारे गाली दे रहा है तुमको, दे आर डूइंग ऑल दिस सो दैट यू रियलाइज योर पोटेंशियल मैन। भगवान करवा रहे हैं सब, सो यू फील लाइक देयर इज अ गन एट योर हेड, बट यू आर नॉट, यू आर रिजेक्टिंग द गन, यू आर लाइक यू आर रॉन्ग टू पुट अ गन ऑन द हेड। नो दे Yeah, आर, I'm like chilled out. I'm like, या दे आर yeah. राइट, because that's how you will realize your potential in the world. अच्छा, ये हीलिंग का ना एक और ये ड्रॉबैक यही है, हम बहुत चिल भी हैं। ठीक है, पूरी दुनिया बाहर में। देखो, तुम्हारे पास जब दोनों स्पेस होंगे ना, चिल का तो तुमने एक्सपीरियंस कर लिया, हमने बहुत डीएसए में चिल करवा लिया तुम्हें। नाउ व्हेन यू गेटिंग इनटू द एक्शन, you know, now work from that gun point, knowing that you can always come back to chill. There was a time when you didn't know how to chill. Now you know how to rest and chill. So that's not going anywhere. Give yourself that space of chill also, 30 minutes in a day if that's what you need. But only 30 minutes. The rest of the time, allow, and you have got a brilliant way to work with it. It doesn't have to come by head. It will come by body because you've done the body work. It will come by, the secret. It will come with heart. It will come with, you will not be able to act from your head. You're ready for it. Remind yourself you're ready now to make that money. And any distraction that comes, उसको ओम काली क्रीम का लिखाया नमक कर दो, स्वाहा। एंड मे बी राइट और डायरी के, अच्छा ये पॉइंट ऑफ व्यू आया, ये बस आया, ये आया, उसको मैं देखूंगी, सैटरडे को देखूंगी। Maybe we'll come on Saturday and talk about it. You don't have to do the work yourself. We can do these as coaching calls only. Just talk about it here and don't do the work in the week. पैसे बनाओ, तुम लोग को यूनिवर्स स्प्रिंग में आना है। आई वांट टू बिल्ड अ यूनिवर्स। You have time to make money. Make your money. Mhm. Ah. The more I was sitting with Universe Spring, the more that vision was expanding. And I felt like, wow, it would be so nice. Like, पहले मुझे था कि 10 लोग लेके आऊंगी मैं। फिर मैंने कहा नहीं यार, मेरे को तो एक्चुअली आई वांट रियली कमिटेड, maybe 3-4 participants only. I've increased the price also. 35 कर दिया मैंने। For you guys, I'll do a different pricing. क्योंकि मुझे लगा कि यार, what if there are like, 3-4-5, maybe 3-4 founding members of Universe, because that's where we're building the foundation. So people who are really ready to talk about this work, they're ready to bring women to their connection with their feminine and their power, would then maybe lead it as a universe themselves without me doing have to, me becoming the center of it. And then, like, it can become such a space where, like, so many, like, hundreds of women will be like, each one of working with, be connected with their unis. They will be like, have visions of having like 100 uni pictures. And like, there's something beautiful, like not the real pictures, but some art. So it has so much potential when the foundation is built right. Um, and it is such a demand. I once posted in DWFE, I got 40 requests for uni sessions. मैंने 3 ली थी केवल. So there is need, there is demand. Just that there is need and demand for healing. There is need and demand for coaching.
People are buying services. And you know, कन्वर्जन में टाइम लगता है. ऐसा नहीं होता कि तुम अभी डालोगे और अभी 3 लाख देने वाला क्लाइंट आ ही जाएगा. वो टाइमलाइन हमारे ऊपर नहीं है. वो कई बार आधे दिन में भी होती है, कई बार 3 महीने भी होती है. सो एक सेकेंडरी ऑप्शन रखना जहां पर मैं और हाथ पैर भी मार सकती हूँ, उसमें कोई बुरी बात नहीं है. जैसे तुम्हारा फ्रीलांसिंग है, तो मैं वो एक ऑप्शन रखा है कि यार मैं 100 कोचेस से बात करूंगी तो कम से कम 2 कोचेस तो मानेंगे. हाउ डू आई नॉट talk to 100 coaches or whatever, whosoever you work with, is my question. And having that also as an option is not bad, because that also might give me more sense of stability that I need. And then the rest 98 will also come next month, next month, next month, next month करके आएंगे. तो मेरे को नहीं लगता कि जॉब को या किसी भी दूसरे काम को रिजेक्ट कर देना चाहिए. मैंने 8 साल जॉब की है, 8+ साल, 8.5 साल. And it gave me a lot of space, freedom, money to learn skills. Yeah. From the 2015 only I started learning, even 14 only. जब मैं इंटर्नशिप करी थी तो मुझे 20,000 रुपये मिलते थे. बैंगलोर में थी मैं, तो मैंने एक CSR सर्टिफिकेशन किया था, जहाँ पे मैं सारे कॉल्स जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस थे वो विजिट किए थे. उनकी फाउंडर्स से मिले थे, मशीनरी, उनका सबका इंफ्रा जो भी था वो सब समझा था, सीखा था. तब से मैंने एक्चुअल मतलब पैसे लगा के, पहले तो स्पिरिचुअलिटी तो आप बचपन से पढ़ने लगते हो, लेकिन पैसे लगा के जो सीखना शुरू किया. 15 में मैंने NLP सीखा, 16 में मैंने NVC सीखा, 17 17 में मैंने पता नहीं क्या सीखा, याद तो नहीं है, पर 18 में मैंने एक्सिस कॉन्शियसनेस सीखा. You are talking about the year, right? 2017 or your age? ईयर. Year. Yeah, yeah. तो all of that, and I used to travel for these workshops also. Himachal, Jaipur, Udaipur. So of course my job gave me that money to be able to do that. And I had responsibilities. I had my education loan that I finished. I had to give money to my house also. So I'm very grateful for what my job has given me. Plus the inner work that I was doing always kept me detached, not attach my self-worth with my job. Always, um, but of course there was shadow also. I was always living in guilt of not being 100% in my job, of being the hidden person who doesn't want to be. Because there are people who are like, हाँ बताओ क्या काम करना है. I was never like, हाँ बताओ क्या काम करना है. मुझे दे दोगे तो मैं कर दूंगी. There was guilt and shame attached with that also. And the work that I'm doing is also to to heal that guilt and shame part of me. तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं. जॉब करने के भी हैं, नहीं करने के भी हैं. बैलेंस मेंटेन करने के भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे. कि मान लो मैंने कुछ किया है, वो ही मेरा दिन का 2-3 घंटा 4 घंटा ले रहा होगा, पर बाकी फिर मैं अपनी एनर्जी कैसे कंजर्व कर सकती हूँ टू डू द जॉब दैट आई वांट टू डू. एंड हमने एक बार नीड्स प्रायोरिटाइज की थी ना, तो याद रखना हो, ग्रैटिट्यूड रखना कि यार यहाँ से मेरी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की नीड मिल रही है, और यहाँ से मेरी क्रिएटिविटी और एडवेंचर और फुलफिलमेंट की नीड सेटिस्फाई हो रही है. So nothing becomes wrong or right. It both becomes complementary to each other, because here it gives me energy to do this. So that's what it is. बहुत नोविस क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. लाइक सिंस दिस इज गोइंग इन माय माइंड आल्सो, इन मानवीज माइंड आल्सो. लाइक आई हैव नेवर बीन इन लाइक ए वर्क पर इन्वायरमेंट में कभी रहे ही नहीं है वो दोस्त. लाइक आई हैव बीन थ्रू आउट इन माय लाइफ वो स्टूडेंट फेज में ही रहे. सो इवन इफ आई वांट टू नाउ वर्क बैक, मुझे नहीं पता कि मैं किस फील्ड में जा सकती हूँ लिटरली. लाइक एक्सेप्ट इफ इट इज नॉट रिसर्च. एक्सपेंशन स्पेस. तुम फिर से श्रिंक करके अपने आइडेंटिटी में घुस रहे हो कि मैंने ये डिग्री की है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है. नो दैट्स व्हाट लाइक आई एम आस्किंग, इज देयर समवन हु कैन लाइक कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गाइड कर सके लाइक विद दीज आर माय स्किल्स एंड विद दिस स्किल्स व्हिच आर द जॉब आई
could find, because मुझे literally समझ इस at present I'm not getting कि मैं कहाँ जाऊँ. करियर काउंसलर्स होते हैं पर वो भी बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच में ही समझेंगे। तुम किसी करियर काउंसलर से तो ताकि तुम्हें ट्रेडिशनली क्या जॉब्स अवेलेबल है वो समझ में आ जाए। बैंगलोर में हो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बैंगलोर में तो स्टार्टअप्स और को अगर तुम अपना वो दिखाओगे ना, एक जर्नी दिखाओगे, मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होती मुझे ऐसा लगता है, जब मैंने जॉब छोड़ी थी ना तो मुझे ऐसा लगा था कि यार मैं अगर जॉब करना भी चाहूंगी बाद में तो मैंने उनको ये बताऊंगी कि यार मैंने ना जॉब छोड़ के एक अपना कंपनी बनाया शक्तिवर्स का, जहाँ पर मैं फैसिलिटेट करी थी, जहाँ पर मैं ये करी थी वो करी थी। अ, कुछ भी, मतलब अगर मुझे जॉब के लिए दिखाना है तो मैं कुछ और भी कर दूंगी। So, and now when I reply for the job, I would have a very different personality altogether that they will judge me with. And Bangalore startups and companies are also quite, they want people who are really self-leading, who have that inner clarity, who can have the ability to take initiatives and risk. So I think there are, like, you can have a very different way of projecting yourself with the strength that you have achieved and how it makes you different. You're not a boring any other person who has just done the job. You have really have the field work of life and living, and that can become something. Um, एक इकिगाई मॉडल पे वर्क करके देखो, एंड वी कैन, इफ यू हैव क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम वी कैन अगेन कम बैक टू दिस टॉपिक आल्सो, पुट डाउन इन द ग्रुप व्हाट यू नीड। कि मतलब मैं किस किस के लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, काम कर सकती हूँ किसके किसके साथ, है ना। चैट जीपीटी को पूछते हैं. चार पे चार तो हाँ। These are my skills. Tell me what. आई थिंक विद बिकॉज वी हैव डन दिस कोचिंग वर्क एंड एवरीथिंग, चार पे चार तो बाय डिफॉल्ट है। क्योंकि यू हैव more human experience and connection. You can build workshops for people and you can curate things for people as an additional thing, not as your main job necessarily. तो वो तो आई थिंक होगा ही होगा। There is a lot of fear around that. Like I have a lot of ideas, लेकिन मेरे को बहुत बहुत ज्यादा डर लग रहा है एग्जीक्यूट करने में। मुझे लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर मेरे अगर साथ तो मे बी आएंगे, पैसे आएंगे, थोड़े बहुत आ जाएंगे, बट फिर दोबारा लाना है, फिर उसका हेडेक। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीलांसिंग जॉब में या फ्रीलांसिंग में? फ्रीलांसिंग, हम्म, हम्म, like I just feel like I don't have the strength anymore to deal with so much uncertainty. मुश्किल हो रहा है। फाइंड सम अनसर्टेनिटी इन दैट केस, है ना। कोई जॉब जो मान भी मुझे 70,000 नहीं दे रही है, 50,000 दे रही है, लेकिन कम टाइम ले रही है मेरा रिलेटिवली। एक दूसरी जॉब है जो 70,000 दे रही है, ज्यादा टाइम ले रही है, दे हैव लाइक रियली हाई एक्सपेक्टेशंस, देन इट्स ओके टू गो फॉर दैट। हम्म। तो one is that option, definitely. I think HR jobs are pretty cool that way. Um, I think I really found, I don't think they pay well, but जो इस तरह के इवेंट स्पेसेस होते हैं वहाँ पे जो कम्युनिटी मैनेजर की जॉब होती है, इवेंट मैनेजमेंट की जो जॉब होती है, तो मुझे लगता है दैट इज अ वेरी मच अ जॉब दैट allows me to connect to more people. Um, so that also helps me in my coaching. I don't know how much they pay, but it's a piece कि मैं पूरे दिन एक कैफे में बैठी हुई हूँ. People are coming, I have to talk to them, and I have to manage this entire cafe में जो events हो रहे हैं. ये सब मुझे manage करना पड़ेगा on Excel or on Book My Show and other spaces. I have to talk to coaches and people who can do the workshop here, and I can help them bring more traffic to their space. But it gives me to sit in a cafe which I like. um, Maybe I can take out some time during the day also for myself. That can also be a deal between us. Between 1 to 3, I will not be available. I'll do my work here only. Even if that pays lesser, but it really takes care of my
मुझे पूरे दिन रहने का कुछ है, खाने पीने का कुछ है, बात करने का कुछ है, काम का कुछ है, एंड आई हैव टू जस्ट गो बैक टू होम एंड स्लीप. um it works that way, I think. Anything that makes you feel there is certainty. I think we all love certainty. Certainty is or gives you stability, and stability on which something can grow. So bring some certainty in your life, definitely. It is nervous system के लिए बहुत टायरिंग हो जाएगा ये कि उसे इतनी सारी अनसर्टेनिटीज के साथ डील करना पड़ रहा है. साधना कह रही मैं क्या करूं, तू एचआर की जॉब कर. बट वही है ना कि कोई सर्टिफिकेशंस नहीं है लाइक. Doesn't matter. You have experience, you have a life, you can show yourself as somebody who is like coming from a really amazing degrees and journeys, and they're passionate about this work, and hence they're choosing it. So ये उन पे एहसान है जो तुम कर रहे हो, because people want to have passionate people in their companies. तो तुम करने को तो रिसर्च साइंटिस्ट कर सकते थे, but you're so passionate about it, and you bring a real difference then in the organization. चलो ठीक है. We'll close this session. It's 2 p.m. and I'll see you next week. Take care, take rest, have fun. Bye. Thank you.